शुरू के दिन से देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग ये गुहार लगाते आए थे कि मणिपुर की आज की जो हालात, ये हालात बड़ा गंभीर होते जा रहे हैं और देश की प्रधानमंत्री होने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यह जिम्मेदारी भी बनते हैं कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर सदन में वो बात रखें। ज्यादा तो हम मांग नहीं किए थे, सिर्फ दो टुक मणिपुर के बारे में बोलने के लिए हमारी तरफ से मांग सदन शुरू होने का पहले से ही हम उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मोदी जी से ये उम्मीद करते हैं कि सदन शुरू होते ही उन्होंने कम से कम मणिपुर के बारे में दो चार बात रखे और हम सदन शुरू कर दें। बस मतलब इसमें साफ है कि हम सदन चलाने के लिए ही सदन में आए और सही ढंग और सुचारू रूप से चले, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को दरखास्त भी की है। लेकिन हमारे बात को जब टालते गए तो हमें भी अपना देश के प्रधानमंत्री को संसद में आने के लिए उपाय भी ढूंढते रहे और ढूंढते अंतिम औजार जो हमारे संसदीय व्यवस्था में होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाए। क्योंकि कम से कम प्रधानमंत्री जी सदन में आके बात तो रखे। तो बस यही आपने देखे हैं, रूल 198 के तहत ये होते हैं हमारा ये अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा। और हमारे पार्लियामेंट की ये परंपरा होते हैं कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा खत्म नहीं होते तब तक बाकी जो बिल वगैरह है उसको पारित नहीं किया जा सकता। मैंने उदाहरण की तहत आपको बताना चाहते हैं कि 1978 ऑपोजिशन लीडर थे स्टीफन साहब, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई शायद 10 या 11 मई को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। उसी दिन मतलब जिस दिन सदन अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे उसी दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा भी शुरू हो गई थी। इसका नतीजा क्या निकला? बाकी सदन सही ढंग से सुचारू रूप से चले। मुझे लगता था कि हमारे पार्टी को, सारे विपक्ष को, हम सबको एहसास होती कि देश की प्रधानमंत्री चांद से लेकर चीता तक हर चीज में बात रखते हैं। तो भला मणिपुर क्यों? कोई भी मुद्दे पे देश की विपक्ष के सारे विपक्ष जब मांग करते हैं, विपक्ष की मांग को सम्मान देते हैं, वो भी हमारे लिए और देश के लिए, मणिपुर के लिए कुछ बात रखेंगे। ये तो हुआ ही नहीं, लेकिन इसके उल्टा हुआ। जैसे कि हमारे परंपरागत जो तरीका है सदन के अंदर
कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से और कोई चर्चा नहीं होना चाहिए जब तक अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा खत्म ना हो। लेकिन आज की सरकार ने सारे परंपरागत जो तरीके थे, रीति रिवाज जो भी थे, सबको अमान्य करते हुए, धजिया उड़ाते हुए एक के बाद एक बिल पारित करते रहे। लगभग मान लीजिए 20 विधायक सदन में पेश तो हुई और बिल पास हो गए 22। 20 बिल पेश हुई, पारित हो गए 22। और सबसे बड़ी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारने के बाद 17 ऐसे बिल है वो भी पारित हो गए। मतलब क्या हुआ कि विपक्ष ने कोई ऐसा विधेयक पे अपना बात रखने की मौका नहीं मिल पाए, तो हम किधर जाए? परंपरा इसको मान्यता देने के लिए सरकार को गुहार लगाएं और नहीं तो बहुमत की बाहुबली पे मानते हुए सर झुका दे। क्या करें? तो इसमें सारे जो इंडिया अलायंस, उन्होंने यह फैसला किया था कि दिल्ली बिल के मुद्दे के अलावा बाकी सारे बिल ना पारित हो और हमारा मांग जारी रहे कि मणिपुर की चर्चा शुरुआती तौर पे किए, बाकी सुचारू रूप से सब कुछ चले। तो ये नजारा हमें भी देखने को मिला जो जिंदगी में नहीं देखा संसदीय इतिहास में। कि भले ही अविश्वास प्रस्ताव ताक में रखा जाए, और बाकी सारे बिल को पारित किया जाए, हमारे ना बचे परंपरा, ना बचे हमारे सदन की रीति रिवाज, फिर देखते देखते सदन भी खत्म हो गए। तो ये बड़ी दुख की बात है कि इतने सारे मेंबर हिंदुस्तान की हर कोने से आते हैं, लेकिन अपना बात रख नहीं पाते। फिर सदन खत्म हो जाते। दिल्ली में तो हमारे कोई सरकारी दफ्तर नहीं है कि यहां रहे, घूमे, चले, काम करे, जैसे कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों के है। हमारे लिए पार्लियामेंट के अलावा और कोई हवा महल तो नहीं है। तो इसलिए ज्यादातर जो एमपी होते हैं, सदन जब चलना शुरू होते उस समय आते हैं, सदन खत्म होते ही चले जाते हैं। बस यही हमारा पार्लियामेंट की ये परफॉर्मेंस है। मैं कभी अपने स्पीकर साहब की और पार्लियामेंट की सेक्रेटरीट इनके खिलाफ कोई बात करना नहीं चाहते। उनकी अपना राय उनके पास है। हमारे स्पीकर साहब भी उत्पादकता के बारे में सारे बता चुके हैं, लेकिन हमारा मन में जो दुख लेके जा रहे हैं, मैं उसी दुख का ही बयान करते हैं और कुछ नहीं।
क्योंकि सदन में हम जब जाते हैं ये मान के चलते हैं कि हमारा स्पीकर साहब हमारा अभिभावक होते हैं, उनकी बयान पे हमें कोई इतराज नहीं। सदन में तो बिल पारित हुई है, ये तो सही है, लेकिन अब बिल पारित में हम लोग भाग नहीं ले पाए, यही हमारा दुख है। चलिए बाकी दो कुछ अगर आपको पूछना चाहिए पूछ सकते हैं, एक एक करके पूछिए, ज्यादा मत पूछिए, एक सवाल बार बार ना दोहरा जाए तो अच्छा होगा। सबसे पहले बात तो यह है कि देश की प्रधानमंत्री को सदन में लाने के लिए मजबूर किए गए हिंदुस्तान की संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ कि जिस प्रधानमंत्री सदन में प्रवेश करते ही मंदिर समझकर अपने माथा टेका था, वो दृश्य आप सबको याद होंगे जरूर। उन्होंने ही मंदिर आने में एतराज करते रहे और हमें कोई इच्छा नहीं रहते हुए भी देश की गंभीर समस्या के बारे में सदन में बात रखने के लिए और चर्चा शुरुआत करने के लिए हमें बुलाने पड़े। और खासकर जब वो लीडर ऑफ द हाउस है, हाउस के नेता है, 2 घंटे गुजर चुके हैं, सोचा कब बोलेंगे मणिपुर। बार बार सदन में हम लोग गुहार लगाते हैं, ये पीएम साहब मणिपुर के बारे में आप बोलोगे या नहीं? कम से कम तो ये बोलना चाहिए था कि हां बोलूंगा, आप रुको, वो भी नहीं कहे। अगर किसी के घर पे आप जाएं, आपको प्यास लगे, एक गिलास पानी मांगे और पानी नहीं मिले तो क्या करें? बाहर जाके तो पानी पीने जाने पड़ते। तो हम भी क्या करें? 2 घंटे से बार बार ये मांग करते रहते हैं कि मणिपुर में आप बोलोगे, मणिपुर में बोलेंगे, मणिपुर में बोलिए। सिर्फ सारे विपक्ष ने, और ये भी मैंने देखा कि सत्तापक्ष की मंत्री कहिए, नेता कहिए, वो भी बैठे बैठे खस्ता होकर, थके हुए, छोटे मोटे नींद भी लेते रहे, मतलब नैप की तरह, छोटे मोटे, गंभीर निद्रा नहीं बल्कि छोटे मोटे निद्रा भी लेते रहे। आप सारे विजुअल देख लो, पता चलेगा। लेकिन हमारी तरफ से सारे विपक्ष ने बड़ी उम्मीद लेके बैठे थे। कुल मिलाकर हमें बाद में पता चले कि प्रधानमंत्री जी और एक रिकॉर्ड शायद तोड़ने वाला है कि हिंदुस्तान के कोई प्रधानमंत्री 2 घंटे से ज्यादा सदन के अंदर भाषण तो नहीं दिया। पता नहीं, रिकॉर्ड करना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री को आते तो हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड किए हैं। रिकॉर्ड के बारे में सदन के अंदर में भी हमें गिनाया क्या क्या रिकॉर्ड किया। लेकिन यह भी एक रिकॉर्ड हुई कि जिस मुद्दे को मेन फोकस करके सारे विपक्षों ने शुरू से गुहार लगाते आ रहे थे, विपक्ष को, वो मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ 3 मिनट की वक्त दिया। जब उनकी भाषण ही 2 घंटे, मान लो 2.25 घंटे तक चली, और सारे विपक्ष को की जो मेन मुद्दा थी उसमें उन्होंने सिर्फ 3 मिनट समय बिताई। तो इसके आप खुद पता कर लो हमें और क्या करना चाहिए था। बोलने के लिए तो बोल के आते हैं, हम अगर रहते तो ना बोलते, चले गए तो बोलने का मौका लेते, किधर जाएं हम लोग? दादा आज प्राइम मिनिस्टर ने फिर से बोला है कि ऑपोजिशन भाग गया है, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों करे? करना ना करना तो हमारी मर्जी है। 1963
3 में भी जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुई थी, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, नरसिम्हा राव जी के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव की कमी नहीं थी, 28 ऐसा अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाए गए थे। कोई ऐसा अविश्वास प्रस्ताव नहीं है जिसमें कोई सरकार गिरे हैं आज तक। तो ये मैंने उस दिन भी कहा, सरकार गिराना ये हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि अब बहुमत है, लेकिन मुद्दा हमारे हाथ थे। वो मुद्दे पे आप आओ, मुद्दे पे नहीं आए, वो बहुमत पे गए, फैसला ही हुई है। वो बोलने में आए, ये बोलेगा हमें जानकारी थे, आज नहीं तो कल यही बोलेंगे। और हम ये पहले ही बोल दिया था कि ये सरकार को गिराने की हालत में हम नहीं आए, लेकिन हमारा जो आशंका है देश के लिए, आम लोगों की जो चिंता है, वो चिंता के बारे में सदन में हम अपना बात रखना चाहते हैं और आप इसको जवाब दिया करो और शुरू करो। दादा आपका जो भाषण था, दादा आपका जो भाषण था लोकसभा में, उसमें आपका जो एक्सपंज हुआ, आपने राजा को अंधा कहा था, वो अंधा वर्ड एक्सपंज हुआ है। और प्रधानमंत्री नीरव मोदी के जैसे नीरव होकर बैठे हुए, ये आपने कहा था, ये एक्सपंज हुआ है। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई गलती, आपको भी लगता है कि नहीं थी कोई गलती? मुझे तो कोई गलती नहीं लगते। स्पीकर साहब अगर सोचे कि अनपार्लियामेंट्री है तो हटा दे सकते, लेकिन स्पीकर साहब को भी हम बाद में दरखास्त कर सकते, फिर ये रेस्टोरेशन करने की भी एक तरीका है। राजा अन्ना मतलब देखिए, अपने समाज में, घर में, जहां भी जाए आप, हम अपना बात रखने में रूपक का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा भाषा की एक कला होते हैं, रूपक का इस्तेमाल करना। बाद में हम इटाली तो नहीं किया। इटाली करने का मतलब क्या होते हैं बखूबी सब समझ पाते हैं, लेकिन हमें रूपक के मुताबिक, अपना घर में भी आप बोलते हो कि कब तक कुंभकर्ण की नींद, कब तक अंधे राजा। अगर जेब से ज्यादा पैसा खर्च करोगे तो लोग कहेगा हरिश्चंद्र बन जाओगे, तो क्या करें हम, किधर जाए। तो अगले दिन में ऐसा हो सकता कि हमारे देश की सरकार ये भगवा व्याकरण भी बना सकते, कि कौन सा भाषा, भगवा शब्दावली भी बना सकते, नया डिक्शनरी बनेगा हिंदुस्तान में, कि सत्ता पक्ष में रहने से सब भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन विपक्ष रहने से आपको ध्यान रखने पड़ेगा कौन कौन सा भाषा इस्तेमाल करने की इजाजत है ही या नहीं। इसका एक डिक्शनरी निकालना चाहिए। ये सत्ता पक्ष रहो, सब कुछ आजादी है, विपक्ष में रहो, हमारे निर्देश पे चलना चाहिए। इसलिए भाषा तुम अपने मर्जी माफिक नहीं, अपने मन की व्यथा को, आपकी मन की चिंता को व्यक्त करने के लिए नहीं, ऐसा भाषा इस्तेमाल करना चाहिए कि कभी एनडीए, बीजेपी और आरएसएस वालों को ठेस ना पहुंचे। यही तो है। कह दीजिए, सारे यहाँ विद्वान व्यक्ति हैं, कह दीजिए नीरव का मतलब क्या होते हैं, बताओ, आप खुद बताओ। मैं बंगाल से आता, मान लो भाई कुछ नहीं जानते, उतने उन लोगों का जरा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन नीरव की मतलब क्या होता है? किसी को आहत करने के लिए, चोट देने के लिए, किसी के दुख देने के लिए मैंने ये नहीं इस्तेमाल किया। शुरू के दिन से ही मैं कह रहा हूं, कोई ऐसा हमारा मकसद नहीं रहते कभी, लेकिन अपना भाव को व्यक्त करने के लिए, मन की बात करने के लिए, मन में जो आते हैं वो बोलना क्या गलत है, नाजायज है? बताइए। आप निकालो नीरव का हिंदी का शुद्ध भाषा है या नहीं। बंगाल से आते हैं, हर बात में हम नीरव, शराब बोलते हैं। शराब का मतलब जो ज्यादा बोलते हैं। मोदी जी को कभी हम शराब भी बोलते हैं, मिस्टर एलोक्वेंट। कभी जब नीरव देखते हैं तो मिस्टर साइलेंट बोलना पड़ेगा, क्या करें। अब जब कभी कभी देखता है स्मार्ट लगता है तो हम लोग स्मार्ट भी कहते हैं, क्यों नहीं कहे। जब जिस रूप में किसी को देखते हैं हम उसी रूप की वर्णना करते हैं। किसी को आहत करने के लिए नहीं, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं,
किसी को दुख देने के लिए नहीं नहीं नहीं। नीरव एक छोटा सा शब्द, इसके लिए महाभारत बनने की कोई जरूरत नहीं। घर पे डिक्शनरी है, गूगल से जरा देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगे कि मैं कोई गलत बोल रहा है आप खुद बोलते जाइए। लेकिन एक बेकार, एक मतलब राय को पहाड़ बनाना कोई राजनीति नहीं है। ये सब राय को पहाड़ बनाना चाहते हैं। वो भी अगर इनकी इजाजत है तो हम सदन में बोल सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं बोल पाओगे। दादा नीरज, न्यूज 18 इंडिया से हमारा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा, इंडिया अलायंस बन चुका है, आप लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं, तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में ही भी तीसरी बार वो सत्ता में आएंगे, एनडीए दोबारा से सत्ता में आएगी। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? कोई प्रधानमंत्री बोलेंगे कि हम अगले चुनाव में हार जाएगा अगले चुनाव? अच्छा, हिंदुस्तान की है, सारे दुनिया की कोई प्रधानमंत्री, कोई प्रेसिडेंट ये कहेंगे चुनाव लड़ने के पहले कि अगले बार हम नहीं आने वाला है, हमारा अंतर्जली यात्रा शुरू हो गए हैं, हम अपना फेयरवेल देते हैं? कोई कहेगा? ऐसा कोई बुरबाक होते हैं दुनिया में कहीं? बताइए आप। अच्छा, पीएम क्या कहे? पीएम ये कहेंगे कि भाई हम इस बार तो हारने जा रहे हैं, तुम अपना चटी बटी लेके भाग जाओ। कोई पीएम कह सकते हैं दुनिया सब? ये नहीं, दुनिया में अब बताइए, दुनिया में ऐसा कोई पीएम, कोई प्रेसिडेंट की नजीर है आपके पास जो ये कहते कि चुनाव के पहले कि हम हारने के लिए जा रहे हैं? तो हमारे वाला पीएम क्यों कहेंगे, जिनके पास 303 इतने सारे नंबर है। जिस पार्टी में मोदी जैसे हस्ती है, जिन पार्टी में मोदी अमित शाह जैसे ताकतवर नेता है, वो अपने पार्टी के सारे लोगों को ऊर्जा भरने के लिए क्या कह सकते? यही कह सकते। मैं तो कहे 3 बार नहीं है, 300 बार आई है, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें, क्या लेना था। लेकिन हम तो ये सरकार को सत्य से निकालने के लिए एकजुट हो रहे हैं। कभी एनडीए की एकजुट हो रहे थे, कभी एनडीए तो एकजुट बीजेपी पार्टी की, कभी विश्व हिंदू परिषद से, कभी भारतीय जनसंघ थे, कभी बीजेपी पार्टी बने, धीरे धीरे एनडीए बने। इसका मतलब क्या होते हैं? मतलब ये साफ निकलता है कि मोदी जी को इंडिया सब पसंद नहीं होते हैं। इसलिए पसंद नहीं होते हैं कि मोदी जी जिन्होंने हर बात में इंडिया इंडिया नारा लगाते हुए काफी सारे एक्रोनिम की जन्म दे चुके हैं, आज उनको इंडिया नाम पे असहज महसूस होते हैं, ये मैं जरूर कहूंगा। नहीं तो इतने सारे ताकतवर है मोदी जी, देश की सबसे बड़ा शक्तिशाली पुरुष है, एक इंडिया नाम को लेकर इतने बार उनको कहने की क्या जरूरत है? कभी कहते हैं मैं 400 सीट लेके आऊंगा, अरे सब सीट लेके आओ, कोई हर्जा नहीं, लेकिन इंडिया नाम में आपका आपत्ति क्यों है? कभी कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते हो ईस्ट इंडिया कंपनी, जब पूछाते हैं कहते हो कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। आप जब कहते हो इंडिया तो अच्छा लगता है, हमें इंडिया बोलने आपको बुरा लगता है, मतलब इंडिया को खुद आप पसंद नहीं करते। अभी तो भारतीय शब्द लाना शुरू हो गए। जब से हम इंडिया की बात करते रहे, इंडिया को टक्कर देने के लिए भारतीय शब्दों का इस्तेमाल होने लगे। अभी इंडिया और भारत में मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारा संविधान तो ये कहते हैं भारत दैट इज इंडिया, ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर भी ये फर्क करना चाहते हैं। दादा सोमनाथ संवाद प्रतिदिन। दादा पिछले बार जब ये अविश्वास प्रस्ताव आया था, तभी मोदी जी ने बोल दिया था कि 2023 में फिर से ये आएगा। क्या आपको लगता है कि ये उनका सोचा समझा प्लान है? उनको पता था पहले से कि 2023 में मणिपुर जलेगा, ये एकदम वेल प्लान होगा, कुछ ऐसा है? ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। देखिए, देश की एक प्रधानमंत्री कभी
ये नहीं चाहेगा कि एक देश जले, मणिपुर जले, और मणिपुर जलने के पीछे इनका कोई मदद हो, ऐसा मैं नहीं कहना चाहते। बेबुनियाद और आधारहीन बात मैं करना नहीं जानते, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि मणिपुर की हालत को संभालने नहीं सके अब तक। जल रहे हैं तो जल रहे हैं, ये मैं जरूर कहना चाहते हैं। क्योंकि आप अगर ढंग से देखोगे, उस दिन की जो अमित शाह जी की भाषण थी, उसमें उन्होंने ये कह रहे थे कि बाफर जोन में मैं अपना सेना को तैनात कर दिया। मान के चलिए, बात ध्यान से सुनिए, बाफर जोन में हमारे सेना को तैनात कर दिया, सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया। मतलब क्या होता है? बाफर जोन का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ संघर्ष होते हैं, बीच में तैनाती के चलते ये रुकते हैं। इधर कुकी, इधर मैती, कुकी जोमो हमार जो है, इधर मैती, और वो खुद स्वीकारते हैं, देश की गृह मंत्री, मतलब स्वीकारते हैं कि इस तरफ कुकी लैंड है, इस तरफ मैती लैंड है। मतलब आज मणिपुर की हालात कितना बिगाड़ चुके हैं कि देश की गृह मंत्री सदन में ये कहते हैं कि मैं बाफर जोन में सेना तैनात किए। ये नहीं कहते कि हमारे मणिपुर से 4,500 से 5,000 आधुनिक हथियारों लूटे गए हैं, जो कभी भी हिंदुस्तान में नहीं हुई, और 3 मास गुजर चुके हैं, फिर भी ये थामने के कोई नाम नहीं लेते हैं। तो सेना बल भेजो या सुरक्षा बल भेजो, ये हथियार बरामद करो, शांति बहाली की व्यवस्था करो, सौहार्द बनाए रखो, भाईचारा को बनाए रखो, यही तो इनका काम था। लेकिन वो बात नहीं करते हुए उन्होंने कह रहे थे कि मैं बाफर जोन में सेना तैनात कर दिया। मतलब ये एलओसी की तरह बात करते हैं। एलओसी क्या होता है? इस तरह पाकिस्तान, इस तरह हिंदुस्तान, बीच में एलओसी। बाफर जोन में वैसा ही है, एक तरह कुकी लैंड, कुकी जोमी लैंड, और दूसरी तरफ मैती लैंड। अब ठीक से पढ़ के देखो, आप सबको जानकारी लेना चाहिए इस मुद्दे पे, क्योंकि बड़ा अद्भुत व्याख्या किए थे अमित शाह जी। उस दिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहे थे उनको सदन के अंदर, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो कैसे समझाऊं? मैं भी शंका जताने की कोशिश की, इस तरीके की बयान देश की गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए था। मैं जरूर ये कहना चाहते थे उस दिन। दादा, आज ऐसा हालत हुई है मणिपुर में कि मणिपुर के पुलिस आर्मी के खिलाफ थाने पे केस दर्ज कराते हैं। हिंदुस्तान में कहीं कब हुआ ना, कभी किसी ने देखा। सोच लीजिए आप लोग जरा, सबको सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप या मैं जो भी हो, हम सब ये देश की स्टेक होल्डर हूं। ये देश हम सब के लिए है, चाहे कोई भी जगह कोई रहे, तो इसलिए सबको सोचना चाहिए। दादा, ये सवाल इधर से है। सदन में जब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही थी, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आपके प्रति जो प्यार और स्नेह है बराबर लगातार दिखा। आपने गृह मंत्री के बयान का जिक्र किया, आपने एक इंटरव्यू दिया था हाल ही में, जिसमें आपने इंडिया गठबंधन को मजबूरी का गठबंधन बताया, और इस बात का जिक्र पुरजोर तरीके से गृह मंत्री ने अपने भाषण में किया। क्या आपको लगता है कि वाकई में मोदी सरकार को हटाने के लिए एक मजबूरी का एक पैन इंडिया प्लेटफॉर्म आप लोग बनाने जा रहे हैं, जिसको पॉलिटिकली उन्होंने हाउस के अंदर भी अपने डिबेट में भुनाया? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुश्किल है आप लोग जैसे लोगों को लेकर, ये हमारे लिए प्यार है, मोहब्बत है। मैं किसी प्यार और मोहब्बत की और विपक्ष रहते हुए किसी से ना ये मांगता ना पूछता। मैं अपना सम्मान चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, जो हमारा हक है। मैं किसी की प्यार और मोहब्बत की मोहताज नहीं हूं। आप जो बात रखे हैं, देखो आप भी आधा अधूरी बात रख दिए हैं चालाकी से। एक मिनट,
आप मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या बोला, आप दोबारा निकाल लीजिए। अच्छा, अरे एजेंसी के ए नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल कहा, मैं बता रहा हूँ आपको मैं आप तो बीजेपी के सांसद की तरह बात करते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं जवाब तो दे दीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये मुद्दे उठाए थे सदन के अंदर, रिकॉर्ड पे देख लो आप क्या कहा उन्होंने। अधीर चौधरी ने कहा कि इंडिया अलायंस जरूरी है और फिर मजबूरी भी है, इसलिए मैं कहा आधा अधूरी बात रखें आपने। फिर दोबारा देख लीजिए, एएनआई हटे नहीं। जिस एजेंसी की बात आप कर रहे हैं वो एजेंसी अभी भी जिंदा है और उनमें हमारा जो भाषण वो भी जिंदा है। अभी उसको हटाने की, क्योंकि वो तो सदन नहीं है कि हटा देंगे, एक्सपंज नहीं होते वहां से। उसका थोड़ा ध्यान से देख लो। एक मिनट, वो मैंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा था कि ये जरूरी है, और फिर कहा जरूरी है और साथ साथ मजबूरी भी है। मजबूरी कोई अन्याय बात नहीं होता है। मान लीजिए अब धूप पे निकालोगे, धूप चलते चलते बारिश आ जाएंगे, तो आप क्या करते हैं, एक छत्र इस्तेमाल करते हैं। ये मजबूरी है, नहीं तो क्या है, कोई गलत है एक छत्र इस्तेमाल करना। इसीलिए आपको कहा अजय भाई कि आधा अधूरी बात करते हैं। ये जरूरी है पहले बोला नहीं, नहीं आपको मैं कह रहा हूं। अच्छा, उसके और आगे पीछे देख लेने से अच्छा होते। मैंने कहा समंदर के नीचे जब तीमी मछलियां चलते हैं तो आजू बाजू में छोटा मछलियां डरते हैं, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी सब मिलके तीमी मछली जैसा सेहत बना लो, क्योंकि तीमी डरे। तो क्या गलत है इस बात में, ये तो साइंटिफिक बात है। समंदर के नीचे ऐसा होते हैं। दादा इधर, Dada, this is probably the first time that a leader of the principal opposition party in the Lok Sabha has been suspended from the House. So what would you say about the current trend of suspensions, that if you speak anything, current trend of suspensions in both Lok Sabha and Rajya Sabha against opposition leaders, how they've been suspended? 4 of them stand suspended today. See, it's really a new phenomena that we have never been experienced during our career in parliament. See, the issue is that as it has been issued by the Speaker Lok Sabha, I cannot disobey his order or direction or anything whatsoever. But very steadfastly and with all humility at my command, I can say that I did not have even a remote objective to disparage or tarnish anyone whosoever in the parliament. If anything is termed unparliamentary, Speaker has the right to delete or expunge it. But I do not know why for 1 or 2 words which were misconstrued by them as an offensive, they may protest to the Speaker according to the provision of the rules and procedures enshrined in our rule book, and got those words expunged. This is the very simple formula. If anything unparliamentary
if any unparliamentary words are uttered by any member whosoever. But what I have experienced that there is a deliberate design by the ruling party to throttle the voice of the opposition by resorting to various unsavory instruments which should not be applied on me. See, I have been hanged, and thereafter I will have to face the trial. It's a very queer situation I have been facing. First of all, to be hanged, thereafter go for trial. But again, I am, with all respect at my command to the chair of the house, I must say that I cannot contradict the direction of the chair. But if I find that this kind of situation could be resolved by court, I may try also to it. Because otherwise, the essence of Indian Parliament will be done away with. So naturally, it's a queer and very, precarious and as well as the retrogressive steps being taken by the government itself. So this kind of retrogressive steps certainly will undermine the spirit of parliamentary democracy, that I can say. दादा एक सेकंड, हिंदुस्तान टाइम्स, फिर जैनेंद्र जी, एबीपी। अभी अभी रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, एक सवाल बार बार सर मैं पूछ लेता हूँ और उसके बाद पूछ लेता हूँ। दादा, आपके संसद में साथी हैं, वरिष्ठ वकील हैं मनीष तिवारी, उन्होंने कहा कि आपका जो निलंबन है ये फिट केस है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। क्या आप ये कदम उठाएंगे? हाँ, उठा सकते, जरूरत पर तो उठा सकते, और वो जो कहा ना मजबूरी से उठा सकते। और एक चीज और जो आप कह रहे हैं कि पहले आपको फांसी दे दी गई, फिर आपका मुझे लगता है क्या करें। मैं सवाल सुन लीजिए, क्या जो प्रिविलेज कमेटी की कार्रवाई होगी उसके सामने आप पेश होकर के? बिल्कुल, बुलाने से जब बुलाएंगे तब पहुंच जाऊंगा। मैं तो बड़ा अस्थिर होकर बैठे हैं, अधीर होकर बैठे हैं कि कब मुझे बुलाया जाए। I have a question. जरूर जाऊंगा। देखिए, जो नियमों है, जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, सब मान के चलते हैं हम लोग, और मान के चलूंगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों ने हमें वोट देकर, उनकी आशीर्वाद दुआ लेकर नुमाइंदे बनते हुए आए हैं, तो नियमों के मुताबिक चलना चाहिए ना, वो जरूर हम करते रहेंगे। Okay, I have a question. मैंने क्या कहा, जा सकते क्या नहीं, क्या कहा, विचार विमर्श कर रहे हैं, मैं तो कह दिए हैं अभी। I have a question to Aditya. Yesterday, the Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi has said that they wanted you to apologize or express regret in the House. Because you didn't express regret, that is the reason why they had to move a motion against you. See, you have all witnessed the bedlam descended in the well. Someone, he's a former wrestler from UP.
He was ferociously descended on the well to even physically assault myself. You have all observed it. I do not know when my apology was sought for. I do not know. But my question is, yes, why should I beg apology? That must be elaborated. And if I can prove that the so-called minister, he has been seeking my apology out of vengeance, then what is to be done? I have sought apology to Mahamahim Rashtrapati ji. By default, I made a mistake, I committed a mistake, and immediately I sought an apology from her. दादा मेरा सवाल Just a bit. So, I cannot afford to satiate the thirst of vengeance, the thirst of retaliation. By anybody whosoever, it is not my fault. दादा मेरा नाम कनिका है, मैं सचमुच अलग से हूँ। सवाल ये है, अभी आपने कहा कि इंडिया अलायंस जो बना है वो एक मजबूत अलायंस है। आपने एक बात और जिक्र किया कि बीजेपी के पास तो मोदी का चेहरा है, अमित शाह का चेहरा है। आपको लगता है कि 2024 में जो आप लोग बोलते हैं कि इंडिया अलायंस मजबूती के साथ लड़ेगा, तो मोदी के चेहरे के और अमित शाह के चेहरे को आप लोग कॉम्पिटिट कर पाएंगे 24 में? देखते जाइए, देरी तो है। इतना चेहरा लेकर क्या करेंगे? आम लोगों की आशीर्वाद हुआ सबसे बड़ा भरोसा है। चेहरा की सूरती में क्या लेना देना है हमसे? आज की चेहरा कल बिगड़ सकते हैं। मुझे अगर बुरा लगता है, मैं अगर जाए सैलून में, पार्लर में, मुझे भी अच्छा दिखाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई सुंदर हूं या सुंदरी हूं। दादा 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 किरण रिजिजू और तमाम नॉर्थ ईस्ट माइक कौन है? किरण रिजिजू और नॉर्थ ईस्ट के तमाम सांसदों ने कल एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी ने जो जिक्र किया था कि आर्मी 24 घंटे में मणिपुर में शांति ला सकती है, उस शब्द को लेकर निंदा की है और कहा है कि इन्होंने तो 1976 में मिजोरम में बम डाले थे। इनकी ये परंपरा रही है। तो उस पत्र को लेकर और किरण रिजिजू के बयान इनको ये मतलब पता नहीं कि मिजो अकॉर्ड राजीव गांधी जी ने किए थे। ये तो माहिर है हाँ को ना करना, ना को हाँ करने। आपको राजीव गांधी जी मतलब कांग्रेस जमाने में मिजोरम में मिजो अकॉर्ड हुई थी। अब देखो मिजो अकॉर्ड किसने किया था? कांग्रेस जमाने में किया था मिजो अकॉर्ड। अब इतिहास पढ़ लो। अगर कहीं बम गिराना की जरूरत होते है तो हो सकते। मैं तो चाहता हूं कि लद्दाख में बम गिराओ और चीना फौज को हटाओ वहां से, चाहे क्यों ना वो हमारे देश के अंदर बमबारी हो, क्योंकि चीना फौज हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए देश के अंदर बमबारी होना चाहिए चीना फौज को हटाने के लिए। अगर कहीं मिजोरम के अंदर कोई बाहर वाले फौज के अगर घुसपैठिया होते तो बम एक बने 100 बार गिराना चाहिए था। इसमें कोई अंडर नहीं। लद्दाख में हमारे जमीन पे आके चीना फौज ने बैठे हैं। अरुणाचल में हमारे जमीन में चीना फौजों की गांव बसा लिए हैं। वहां जाके बम गिराओ। हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारे मोदी देश के अंदर बम गिराते हैं, जरूरत पड़ते गिराना चाहिए। लेकिन मिजोरम अकॉर्ड किसने किया था बताइए? लाल डेंगा के साथ किसने अकॉर्ड किया था बताइए? वो तो बात जिक्र नहीं होगा। यही तो समस्या है हमारे देश के लिए। लोगों को गुमराह करो, लोगों को गलत समझाओ और सत्ता में रह जाओ, बस। एक सवाल है। आज प्रधानमंत्री ने अपने पार्टी के एक प्रोग्राम में कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि पंचायत चुनाव में खूनी खेल खेला गया बंगाल में। क्या आप भी मानते हैं? हाँ, बहुत हुआ है, क्यों नहीं मानेंगे? अभी एक इसी में ऐड ऑन बोल दीजिए। पीएम मोदी ने स्पीच में ये भी कहा है कि ऑपोजिशन को डराने के लिए वायलेंस यूज किया जा रहा है। देखिए, मैं तो क्यों नहीं होगा।
बांग्ला में हुआ है, कब कहेगा कि राजस्थान में हुआ है, कब कहेगा कि छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये नहीं कहेगा कि यूपी में हो रहा है। समस्या इसमें है, ये कभी नहीं कहेगा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ये कभी नहीं कहेगा कि मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, ये कभी नहीं कहेगा कि हरियाणा में नू में क्या हो रहे हैं, ये नहीं कहेगा। जिनको इनको लगेगा ये बोलने से हमारा पक्ष सही रहेगा, ये सिलेक्टिव एक्विजिशन होते हैं, ये सिलेक्टिव एक्विजिशन। और दूसरी बात ये है कि मणिपुर के साथ बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तुलना नहीं होना चाहिए। अगर तुलना करे तो चाना बेदना में कोई फर्क नहीं रहेगा, बुलक और हिलक में कोई फर्क नहीं रहेगा, अनारस और बेनारस में कोई फर्क नहीं रहेगा। अधीर जी एक सवाल है। आप 21 जो लोग गए थे, आप विपक्ष पार्टी गठबंधन से 21 लोग गए थे, उसमें आप भी थे, तो मणिपुर को लेकर के या मणिपुर मुद्दे को लेकर के विपक्ष का अब क्या स्टैंड होगा? हमारा तो मांग यही होगा, मणिपुर में शांति बहाल हो, मणिपुर सौहार्द बने रखे, मणिपुर में भाईचारा की बहाली हो, मणिपुर के लोग शांति में अपना जिंदगी गुजार पाए, क्योंकि लोगों की वहां इतना दुख वेदना, इतना परेशानियां हैं, आप सोच नहीं सकते। आपके लोगों के बहुत सारे साथियां मणिपुर में गए थे, दौरा किए, उन लोगों को पूछ लीजिए आप, अगर एक भी लफ्ज हम लोग ज्यादा बोलते हैं तो आप आके जो मर्जी हमारे खिलाफ बोलते रहो। ये ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, ये कोई पार्टी के मसला नहीं है, इट्स ए डिजास्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, इट्स ए ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। भयंकर हालत, भयंकर हालत, भयंकर हालत। देखिए, मणिपुर हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो, वहां की कोई भी घटना घटे, मेनलैंड इंडिया में उसका ज्यादा असर नहीं होते, इसलिए ये सरकार को भी इस तरीके की उदासीनता देख पाते हैं। अगर मणिपुर की घटना सारा देश की राजनीति में, सियासत में कोई जबरदस्त कोई प्रभाव का मसला होते तो मणिपुर के लिए सरकार भी और ज्यादा व्यस्त रहते, और ज्यादा तकलीफ उठाते, कोशिश करते। लेकिन मेनलैंड इंडिया में मणिपुर के मुद्दे को ज्यादा असर नहीं देख पाते लोग, इसलिए चुप्पी साधे हैं, इसलिए इतना उदासीनता अभी भी अब देख रहे हो। दादा लास्ट 2 क्वेश्चन आप और उसके बाद बस हो गया। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने गृह मंत्री को खत लिखा है और कहा है कि धर्म के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। धर्म के आधार पे जनगणना होनी चाहिए, धर्म के आधार पर। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा है तो उसका जो है अल्पसंख्यक का जो पद है वो हटा देनी चाहिए। तो मैं क्या करूं? क्या ऐसा होना चाहिए? दादा, हाँ बोलिए। दादा प्रधानमंत्री ने 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाने तो पहले भी किया था, लेकिन क्या विपक्ष के लोगों को आमंत्रण मिला है इस बारे में? अब तक तो नहीं मिले, हो सकता कि 14 अगस्त रात को मिल सकते, तो जैसे आ नहीं पाए, बाद में कहेंगे वो नहीं आए। और दूसरे बात, तिरंगा पताका हमसे उधार लेते हैं, मोदी जी ज्यादा उधार लेना चीज पसंद करते हैं। जब आरएसएस की नारा था कि भगवा ध्वज फैलेंगे, तो मोदी जी भी तिरंगा में आ गए, मतलब हमारी जो बात वो अभी मानने लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं हिंदुस्तान में तिरंगा के अलावा और कुछ नहीं हो सकते हैं। कम से कम ये तो बात माने। एक दिन ऐसा था, तिरंगा फैलाने के लिए आरएसएस के लोग मैसूर में 22 कांग्रेसियों को हत्या किए थे। उस दिन सदन में ब्यौरा दिया था मैंने, जाके पता कर लो इतिहास में। आज तिरंगा की पूजा होते हैं, ये तब पूजा करते हैं जब इनको पुसाता है, पुसाने से पूजा होगा। नहीं तो ऐसा कह सकते कि गुड़ और गोबर, मैं गोबर हूं और मोदी गुड़ है, मोदी हमें गुड़ बनाना चाहते थे, गोबर बन गया। गोबर में भी नफरत आ गए, गाय में नफरत आ गए, और कहां जाए हम लोग? थैंक यू। ज्यादा मजा आ गया।
పాపం ఎంత బలమైనదైనా అంతిమ విజయం సత్యానిదే. రాఘవ మీకోసం వస్తున్నారమ్మా. నేను ఎదురు చూస్తుంటాను. నీకు పుణ్యం ఉంటుంది, పైకి చూడమాకరా. మన చరిత్ర నీ చేతుల్లో ఉంది. We were at $500 billion in the year 2021. In the year 22-23, the year just gone by, we grew from 675 to 776 billion. Prime Minister Modi has consistently been guiding us that we should bring out high quality products from India. It's not only about our exports, it's our consumers. Okay. I am responsible to 140 crore Indians. But when we talk of self-reliance, we are not closing India's doors to international engagement. If you at all ask me, I think we are opening them wider. The people of India are smart and understand what's good for them. They don't want to be a Sri Lanka or a Pakistan. From a fragile 5 economy 10 years ago to the world's 5th largest economy. The mics are determined by the chair, and no mic goes off for anybody, but there's a time limit. It's an absolute travesty of the truth to suggest that the mics are switched off for the opposition members. They're switched off for ruling party member. If you have the Shiv Sena, where Uddhav Thackeray was suddenly chosen out of the blues, whereas Raj Thackeray seemed to be the natural heir. As they say, blood is thinner than water. He wanted his own son. It's important that political families, instead of treating their parties as fiefdoms, should start respecting actual activists who can do good for the country. With the Delhi ordinance, how is it going to work? It'll be passed in the parliament. So it's going to pass in the Rajya Sabha. You're 100% certain about that. Whenever there was something my wife was very sure of, she would say 110%. Okay. So that's what I'll use today. 110%. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. My guest today is a second-generation politician from the Bharatiya Janata Party. He has seen policies and programs being formed in the party in the Vajpayee-Advani era and now to the Modi-Shah era. Piyush Goyal is known to be part of the group of ministers which is on a mission mode to accomplish goals set before them before campaigning begins for the 2024 general election. Mr. Goyal has held several portfolios in the cabinet, but currently he is Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs and Public Distribution, Minister of Textiles, and is leader of the Rajya Sabha. In his tenure as Minister of Commerce and Industry, India achieved its highest ever exports of about $675 billion in 2021-22. Piyushji, thank you so much for being part of this podcast. I've been looking forward to speaking with you. I've interviewed you before, but not as part of the podcast. This is a completely different format, but you are mahir in all this. You've done a podcast before. So let's begin with, you have a zillion portfolios. So let me begin with commerce and industry first. What are the steps that your government is taking to boost exports? I want to know, because I've just read out in the introduction that the highest ever exports under your tenure, which we had, which is $675 billion, is 2021-22 is what I've heard. So tell me, how did you get here? What was your goal that was set before you? And what is the goal for the next year now? Thank you very much for giving me this opportunity, Smita ji. Truly a delight to engage with this new form of communication which is taking the world by storm. And I had the opportunity to see some of your shows. They're really quite interesting, very engaging, very enjoyable. Thank you. Smita ji, exports are the strength of an economy. Particularly when you're producing high quality products, they help you reach out to newer markets, they help you on foreign exchange, they provide jobs to crores of your brothers and sisters. And Prime Minister Narendra Modi is very focused that if India has to become a developed nation, we will have to look at greater international engagements. On 6th of August 2021, in the middle of COVID, he addressed all the industry associations, captains of industry, all our export promotion councils, all the line ministries who are engaged with products, goods and services which are exported. And he truly gave a very, very inspiring address. He brought the best out of each one of us and got the whole ecosystem
in the true spirit of the whole of the government approach. Here he made it a whole of the nation approach. And got the best coming out of all stakeholders related to the export sector. So we've tried to make ease of doing business so that more people can venture into newer areas. We focused on expanding existing markets, existing sectors, also looked at new sectors, new markets, virgin areas where we had not ventured before. We engaged 180 missions across the world, and all mission heads were given a KPI, a key performance indicator. For those who don't know, just to interrupt you, missions, you mean embassies, right? The embassies or high commissions. High commissions, right. And he got all of them engaged, saying that you will be assessed on your performance on trade, your performance on technology, your performance on tourism. Okay. And this became the collective energy of the whole ecosystem. And we were at $500 billion in the year 2021. You're right, we achieved 675 in the year 21-22, but I'll just correct you a little bit. In the year 22-23, the year just gone by, a very challenging year, very difficult year. Yeah. The conflict is not over. World's biggest and most developed nations are facing recession. Inflation is very high. Despite that, last year we grew from 675 to 776 billion. Okay. So we've actually, if you see in rupees, we've grown from 38 lakh crores of exports 2 years ago. We have grown to 62 lakh crores in 2 years. Okay. Now just imagine the jobs, the opportunities, what our startups, our young people are getting. Right. Now, tell me, in this quality control, because exports, one was always, talking about exports, and then you say exports cannot go up because India doesn't have quality control. So where was it on your priority list to see that ye jugaad ka maal nahi karna chahiye to have quality control? I know, aapko yaad hoga, there was a time when you went to the market, you would say कि भैया export quality का माल दिखाना, यहाँ लिखा होता था for export quality. Yeah. And मुझे याद है 2014-15 में, in the first year of government, Prime Minister Modi gave us a mantra, Z, zero effect, zero defect. And he has consistently maintained that India cannot afford to be left behind in the race for good quality. Just like you recognize Switzerland for a watch maybe or chocolates, or you recognize Japan for precision manufacturing, or for zero defect manufacturing, or you recognize, let's say, the whiskies of United Kingdom, the Scotch whiskies or single malts. Every country has focused on creating a brand equity. Okay. And Prime Minister Modi has consistently been guiding us that we should bring out high quality products from India, which are of world standards, internationally accepted standards. We've been aggressively working on it for twin purposes. It's not only about our exports, it's our consumers. Okay. I am responsible to 140 crore Indians for ensuring that they get a good deal, they get value for money. They get high quality products at affordable prices as Consumer Affairs Minister. So it's the Consumer Affairs Department, based on the demand for high quality products that our consumers have a right to, that is focusing on expanding quality standards. We now have a huge number of standards in goods and services, and we continue to have new standards coming out in the thousands. We have also introduced the concept of quality control orders more aggressively. Okay. There were quality control orders by around 2014. I think we had 110, 120 products which came under quality control. Now we have crossed 400, and the target is to go up to 1,500 products which will have a strict quality control order. And all production in India or all goods sold in India, even if imported, will all have to meet those exacting quality standards so that the people of India get a fair deal and our whole mindset for quality becomes... How do you enforce that? The quality control orders are enforced at every point. So if any imports come in, they're
they are enforced at the customs, at the borders. Within India, we do keep doing quality checks for goods being sold in the market. We pick up samples randomly from shops and get them quality tested. We also ensure that goods that are sold have the mark of BIS, the Bureau of Indian Standards. So Bureau of Indian Standards for all goods which are non-food products and the FSSAI for all food-related products. These two organizations, we have now centered all the quality control aspects. Earlier, there were many different bodies. Agmark would do something for agricultural products. We've closed that. Okay. All Agmark products have gone to FSSAI. Yeah. Earlier, BIS used to do over 150 food products. Yeah. So, market and Didn't know who to stakeholders go are all to. confused. Huh. We've now brought it down to only two, BIS and FSSAI. That way, we've wound up all the other organizations. We've reduced the burden on our business persons, made it easier to do business, and we are also been able to enforce effective compliance of quality control orders with that. I'm guessing this is going to come under ease of doing business also, which you talked about, where people who are manufacturing, they have a single window to go to, and they are not confused as to where to go. On this, India jumped 79 positions from 142 in 2014 to 63rd. You were talking about these regulatory mechanisms that came into force. How do international standards organizations judge that, okay, this is what it means, ease of doing business? Well, there used to be a very established World Bank ranking methodology. And this methodology was more stakeholder feedback related. So they would come, they would assess the processes and government systems to engage with businesses. They would talk to business persons, micro, small, medium and large, and find out whether people are really experiencing that change. And out of that, they would work out the index. And the index is not an absolute number. It's a relative index. So you are relative to other countries at 63rd rank today. Right. Unfortunately, in 2019, some irregularities were found in a neighboring nation. Not necessarily a nation which has very transparent systems. So therefore they tried to game the ranking system, got caught with their hand in the till, and the World Bank decided to discontinue the rankings. Despite that, we have continued to rank our states. We have continued to pursue the path of making it easier to do business. So really we don't know where we are ranked relative to other countries since the ranking is stopped since 19, but I'm quite confident that if any ranking was to be done now, we would be far better, possibly in the top 50. Are the states competing with each other in this? It's brilliant to see the kind of enthusiasm among states. I do a lot of interaction with states on this subject, on decriminalizing laws, reducing compliance burden, engaging with the national single window system so that business persons or stakeholders have to go to only one website and from there they can get all their approvals in. And I must acknowledge that the states, particularly the young officers in states, are equally enthusiastic. It's a collective effort. The center does drive it. And we are getting probably different types of response from different states. But by and large, every state recognizes that in this competitive world, you've got to be industry friendly, business friendly. Otherwise, investment will go to another state. Correct. Manufacturing sector, let me come to that. Because ever since the Make in India goal has been given by your government to all your state governments, to all your ministers, to the manufacturing industry, and the world is looking at India when it comes to, the supply chain factor. What are the challenges that you faced initially when you took over? What did people come and tell you? And how much have you resolved as far as that is concerned? Well, I think ANI is also a brand ambassador for Make in India. Make in India. You are our very own news agency. And I think you've beaten all other foreign agencies in your work in terms of scale, in terms of depth of coverage. And that is the true strength of India. The 140 crore Indians, particularly our youth, and we are a very youthful country. The kind of new ideas they come up with, the kind of innovations they come up with, there's so much potential in India. Sadly, we were always running after the West. We were always running after the developed countries. The good part is that has stopped. Now we are looking at indigenous solutions to the
multifarious problems the world has on sustainability, on high quality. Everywhere we are finding our youth come up with very, very brilliant ideas. You see the Startup India mission, we are the third largest startup ecosystem in the world today. All of that is truly made in India innovative products or developed in India innovative services. Technologies also. And Make in India really is a subject that Prime Minister Modi initiated right upfront in 2014. And over the years, he's been our greatest votary. He talks about it at various forums. He encourages us to experiment. He encourages youngsters to be willing to fail and accept that and go in for bigger challenges. And to my mind, Make in India has now caught the fancy of Indians. I find more and more Indian businesses also talking about selling domestic products with pride. I hear a lot of Indian businesses saying that we're going to cut down our import dependency, particularly with countries who are inimical to India's interests, who are not very favorable to India. And I see there's a sense of pride in being Indian. There's a sense of pride in consuming Indian goods and services. I think this is a kind of a movement which is taking rapid strides. The challenges are always going to be where some people will look at the least cost alternative. I think we need to take a lesson or two from countries like Japan or Korea, where you'll find a lot of nationalist spirit. They are willing to pay a few rupees more, but want a domestically produced product. They have a sense of pride, a nationalist spirit that these are our local products made by our local craftsmen or workers. And they also respect the fact that they have to support their own local industry. This can't be mandated by the government. This has to come from within. Okay. And I think gradually I'm pursuing this agenda. Prime Minister Modi keeps talking about this all the time. That if all of us make it our collective decision, our collective duty to support each other, support Indian produced goods and services, sky's the limit where we can achieve results. So, as I was saying, I've seen you at international forums when people come to you and ask you about the India story, and you very eloquently express, our hopes, aspirations, and where we want to stand vis-a-vis all these things. But I've also covered these kind of summits, in the 2000s, early 2000s, when there was similar kind of curiosity. But at that time, everybody used to say, we want to invest in your companies, we want to produce, we want you to manufacture, we want to bring that products into our country, but you get stuck with red tapeism in your country, stuck with corruption. Are those issues still to discuss? Do you have to still answer those questions? I don't think today people are complaining about what used to traditionally be our shortcomings. There will certainly be issues, there will certainly be requests, demands, there will certainly be areas where we can improvise, and we have no qualms about acknowledging that we still have a long way to go. But they can see the massive transformation that's happened in the country in the last 9 years. All people who come to India and engage with us, they recognize the fact that Prime Minister Modi has been able to offer a corruption-free environment. Today, no need for dalals or middlemen or public policy managers to be stationed in Delhi to keep going around the government offices to get your work done. They recognize the amount of digitalization that has happened. All approvals can be sought online. They recognize the fact that infrastructure has seen massive growth and improvement over the last few years. They also recognize that this government is responsive. They are approachable. You don't need a friend to tell me if you want to have a meeting with me. You just send a mail, and I find merit in your request, or I find merit in the potential that you offer. And very often we meet people from villages, we meet people from small towns. We learn a lot from them. We get a lot of feedback from them. So I think the responsiveness of this government, the willingness and the openness with which we are engaging with stakeholders is truly the calling card of the government today. At local level, at state level, some people do complain of problems.
I very often talk to my colleagues in the States also, where I request them that, look, you have this backlog of subsidies that you had promised or incentives you have promised an industry, but you haven't paid up, and it's giving your state a bad name and consequentially the country a bad name. But I do find people are responsive by and large. So very recently I met an industry minister who first thing he did was start the conversation by saying, I took your point very seriously when you told me about this, and I have sorted out and cleared the subsidy claims that you mentioned. I said, I hope you didn't clear the subsidy claim of the case that I mentioned, because that was just what came to my attention. Obviously there must be many more. He said, no, we've cleared all. Backlog is all just gone. done for one company. And I was immensely pleased. Okay. Now politically we may be at different spectrum. We may be at different ideology or against each other. But I get great satisfaction that when it comes to our national interest, save and except a few cases, by and large, the nation and the people in the country are on the same page. Right. You were mentioning small towns and villages, and we're talking about manufacturing still. So the SMEs, let me get to that part. There are 75 million or 80 million SMEs or something like that in this country. How do you keep track about quality control? How do we ensure that the stuff that is coming from there is quality? Because suppose something is made, like एक कुर्ता बन गया, या फिर बिस्किट का पैकेट बन गया, या पापड़ बन गया, and it is exported, and if the quality is not good, it's not just the product which brings a bad name, it's the made in India label that brings a bad name. I'm not saying that small and medium enterprises have bad quality, but what I'm guessing is that maybe it is not put through the rigors like a bigger manufacturer would. So how does India control that? Well, that's a very good question. First of all, I must tell you that we are very sensitive to the concerns that the very small people may not be able to adopt these standards overnight. So in most of our quality control orders, we give a transition period. Okay. So the small industry is given a certain amount of time. The micro industry whose turnover is less than 5 crores is given a certain longer period of time. I've also told my department that if you come across through stakeholder consultation and feedback any difficulty that very small people may have, let's say somebody with a turnover of 20-30 lakhs or 50 lakhs, then we can even look at even further longer transition period. Or if it's only something which is sold locally, we could even look at exemptions. So we are a very open government, a listening government, and very happy to engage with stakeholders and find solutions. I recently met with the shoes manufacturers, leather or sports shoes. There were some concerns that they had, and they had highlighted that to me. They had highlighted that through the press. I immediately called a meeting, and we got all people, traders, manufacturers, big, small, tiny. We got retailers who are doing malls or running shoe stores. And we had a very open, free and frank discussion. Wherever I felt that they had genuine problems, we found solutions to it. Wherever I felt that these are certain things where you'll have to take a little tough stand, we took a tough stand, because ultimately, you're right, it's the nation's brand that suffers. Also, I think there's a lot more that needs to be done in terms of awareness, both of our consumers and service providers or goods providers. That's where I think friends like you, podcasts like what we are doing today can play an important role. This awareness, once the consumers have and they start demanding better quality, I'm very confident India's image will change, our thinking will change, we'll start producing good quality products. And I've run industry myself from a very young age. I can assure you, Smitaji, my own experience says quality is cheap. Quality never costs more money. Okay. It doesn't make your product more expensive. Quality helps you reduce wastage. It helps you get a better price more often than not. Helps you capture bigger markets. Helps you grow. And therefore, I think a little more training or let's say engagement with the small people to help them understand the importance of quality
is what we are doing right now. So we were talking about shoe manufacturers, and it just suddenly occurred to me to ask you this question, that a major problem, one of the earliest stories I did when I was working for a foreign broadcaster was about the environment issue with regard to shoe manufacturing, when they were dumping all their colored all the waste into the rivers. So that's why I want to come to that aspect, that when you bring in manufacturers, retailers, and exporters, do you even have that environment issue in mind when you bring them? In most conversations with industry, sustainability is an issue today. Okay. I have in the morning today inaugurated a trade fair at Greater Noida, where the textile industry is showcasing their products, fashion accessories are being showcased. And the whole focus of the conversation, both with the industry stakeholders, the products that are on display, and my own engagement over there, was entirely focused around sustainability. Okay. And after my speech, in fact, the chairman of the program and the chairman of the Apparel Exporters Organization actually said that today, wherever we go, the only subject that's under discussion and of deep importance is sustainability. They recognize that important big markets like European Union, UK, US, particularly those with whom we are expanding our trade relations, our free trade agreements, they are very, very conscious of the products that they procure. Indians today have started becoming very conscious of that. You remember when Prime Minister Modi wore the recycled plastic jacket in Parliament? Yeah. I mean, what better brand ambassador than that for India's collective effort to make the world a better place to live in? Yeah. And it created ripples across the world. Of course, juxtapose that to somebody else wearing a Louis Vuitton scarf on the floor of Parliament with a big LV written. That's the stark difference. But I think that's also India, right? That दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं. दोनों अवश्य चल सकती हैं. But the issue was only about we are in Parliament. We are showcasing to the country and our countrymen our concern, our deep respect for every citizen of the country. And I think our textile manufacturers certainly would have been happier to see a scarf made in Kashmir or a scarf made in Himachal Pradesh. Yeah, and we are seeing a lot of that, the gamcha and the gamusa being worn by all of you ministers, all of you are wearing that, and everybody is commenting on that it's not just a fashion statement, it's a statement on pride in India's textiles. And we are seeing a lot of that. Yeah. There was a time, I don't know if you're aware, the Madras lungi. Madras checks. The checks, but it's actually a lungi whose colors fade. Or whose colors change. Bleeding colors. That was the USP. But that was not something which India did out of choice. It was a bad quality product once upon a time, which bleeded color and then became a fashion statement. Okay. Now, we don't want to see an India of today which gets respect out of that failure. Yeah. We want to create today our name for products which really are environment friendly. We want to create a name for very high fashion products. We want to create a name for the artistic value that our artisans bring to the table, that our tailors, that our designers bring to the table. I mean, I meet all the NIFT graduates, the National Institute of Fashion Technology. It's a delight to see some of their work. I engage with some of the fashion designers whom I'm trying to encourage to play a little more active role in the training of these budding fashion technologists. And they are supporting me in that. It's wonderful to see that a former dean of Harvard Business School chooses to do his wedding in Udaipur in India, chooses to bring the world's top business leaders and professors coming to India for his daughter's wedding. It's wonderful to see them come to India and shop the lehengas and the saris, not only for themselves, but they have tailors who are taking the measurement and getting clothes for all the guests. Now this makes you so proud. Yeah. This is showcasing India. This is going to be the ambassadorial effort of our own Indians, our foreign residents also, non-resident Indians who come to India and take back a little bit of India
for the rest of the world. When the Prime Minister recently gave that green diamond to Jill Biden as a gift from India, I had so many people calling me, Abhi, ye kya cheez hai? What is green diamond? Is it green in color? But it doesn't look green in the photograph. So there was a little bit of confusion, and I was like, what is the PM doing? Because he's from Gujarat. The Surat diamond industry is there. Why would he give a diamond which is a fake diamond? Then Darshana ji tweeted that this has been cut and done, everything in that whole process is from the Surat diamond, cutting edge technology used in doing that. And then I understood that. But what happens when the word will get along, oh, this is what the BJP government is doing, fake diamonds ko bech rahe hain bahar? No, I think you need to understand what a diamond is first. As they say, diamonds are forever. Where does that come from? The diamond actually is created from carbon, carbon deposits. So diamonds are not something which are just floating around or come out of the ground. These are products which are developed over thousands of years sometimes from a very small piece of carbon, and further carbon deposits keep adding on that, and a diamond is created. And then that is mined, that's cut and polished, and that's the diamond all of you have been wearing for all these years. Yeah. Lab-grown diamonds are the same thing. Instead of being grown in the womb of the earth, they are being produced in a laboratory. These are lab-grown diamonds, as they call them, LGDs. The same concept. You take a small seed which is put under a machine, and a lot of heat and carbon is deposited on that, due to which it keeps growing, and it creates the same effect of what is happening under the ground. You're doing it in the laboratory. So it's not a fake diamond. It's not even an artificial diamond. It's truly recreating a diamond. Instead of from the Mother Earth, it's being created in a laboratory. The amount of carbon that is used, its effect on sustainability or its effect on the environment is significantly lower than the natural diamonds that are mined. Ecologically friendly, so they're ecologically friendly. We use renewable energy, solar and wind, largely to produce those diamonds. Going forward, the idea is to have completely green diamonds, fully sustainable, only green energy going in to produce these diamonds. And today India has a great edge against the rest of the world in the larger size lab-grown diamonds, where we almost produce most of it around the world. And look at the advantage. Not only are we now making our own diamonds, which were earlier imported from various countries around the world. Now we can make our own diamonds, and the cutting and polishing jobs continue to remain. Yeah. So and also look at the other aspect. Gradually, this will democratize the ownership and the joy of owning a diamond. I think it'll add value. Yeah. It'll add a lot of people into the diamond owning ecosystem. Yes, true. It's, if you remember, since your textiles, it's what happened was that, do you remember when the weaving industry was facing, in fact, one of the earliest programs that I worked for was something called Wither Textiles, which we produced in 1991, when handloom and power loom. And when power loom came and those saris were being produced on the power loom, it was like those who had handloom said, "Ab to sab log pehne lag jayenge silks. It's going to be so cheap." And so what? You know, those Kanjivaram saris or those saris which only the rich could afford, everybody could, thanks to the power loom that came in. Yes and no. I think it's truly revolutionary that everybody got an opportunity to have patolas and Kanjivarams. Yeah. But at the same time, discerning consumers or customers continue to patronize the original hand-woven products. Yeah. Our handicraft and our handloom sector is flourishing. There are large export There's earners. actually a waiting list in some places for a good paithani or a good patola, patan patola. It's quite amazing how it's all started. But anyway, let me get from fashion back to the meat and core. We were talking about the manufacturing sector. So lots of people say that, you know, these industrial complexes which are there in the cities or in the outskirts of the cities, the infrastructure is so poor. Like even, let me just say Gurgaon, if we see just not far from here, the roads,
the approach, there are, the sanitation. There's just nothing available. Or we see the Bandra Kurla complex. Why don't we see that? It's shiny new buildings, but the approach will be terrible. So when people come from abroad and they say कि इतना shiny building है पर वो जो road पे फंस जाते हो, वो infrastructure क्यों नहीं है? Why don't these things, city planning and all, go hand in hand with our manufacturing and our industrial sector? Smita ji, I think while ANI has a very wide span across the country, I don't think you have moved out of Delhi quite a bit. I have. Anyway. I'm assuming so because I just told you Bandra Kurla complex. I went there only last week to see the Sound of Music with my family and some friends. It was a pleasure to drive to Bandra Kurla complex. We glided into Bandra complex. You must have gone at 2 a.m., sir. Ma'am, it's an evening show. Okay. I went right in the middle of the evening. We now have the Bandra Sea Link, on which after we crossed Haji Ali, we were quickly on to Bandra Sea Link. When we came out near the ONGC Chowk, we now have another additional bridge that has come up. You did not have a red batti car. Tell me now. Did you have a red batti car? In Bombay, I used my own. Mumbai, I used my own car. You don't have I don't even use the government car. Okay. So, and even in Delhi for that matter, I use my own personal car. Really? You don't have a red batti wali gaadi? Absolutely no red batti. Nobody putting the... My car is standing right outside. Get somebody to check it out. It's my personal vehicle I bought from wonderful. my own. It's a hybrid. It's environmentally friendly. And you used to have an ambassador car also at one point of time. I still remember. We used to have ambassador for many, many years. Yeah. Then the Fiats, then the 118 NEs. Yeah. Then do you remember the Contessa which came out from the ambassador's table? I've seen you in at least 3 Maruti, types of cars. Yeah, Yes. then the different versions of both, all types of cars. Yeah. But right now I'm on hybrid cars. Hybrid car. Excellent. Ever since 2015 actually. 15 and I had 16. Nitin Gadkari ji in the show and he also came in a hybrid car. So I'm very happy that you've done this. Amazing. I think Prime Minister Modi himself is very conscious that we all need to be messengers of the future. So let's come back to the infrastructure thing. Yeah, so I think if you go to Bandra Kurla complex now, you go straight from the highway onto a flyover which takes you out at in the middle of Bandra Kurla complex at ICICI or there. Monsoons, there's water in the highways. See, I come from Mumbai. I've lived there all my life for the last 6 decades. And there's not something that's happening today. Mumbai has 3 or 4 spurts of rain in every season. And during those 3 or 4 spurts, if that at the time of high rain, the high tide is also there, the combination of that is lethal. You can't do anything about it. Whatever one young person may suddenly say and blame the Mumbai corporation, which I think is very ridiculous because that party, his party used to run the Mumbai Municipal Corporation for decades. The fact of the matter is, in the high tide, Mumbai has several low-lying areas. Yeah. The evacuation of water becomes impossible because if you are evacuating water, it has to have an outlet somewhere. And the Mithi River, which is coming in, the Arabian Sea, all are on high tide. Yeah. The evacuation of water just doesn't have an outlet. So it's something which will need to have a more technological solution, something which will have to be assessed, and maybe we'll have to spend billions of dollars to find an outlet on some other